So today we are going to go with the more practical problems, right? So in lesson 2, let's say an economy produces two goods, t-shirts and cell phones. And this kind of illustration we have done in the school also. So definitely the following table summarizes its production possibility, calculate the margin opportunity cost. So every time when you want to calculate the margin opportunity cost, what you need to do is, आपको क्या करना पड़ेगा? You need to find out the difference between the cell phones, right? हर टाइम आपको cell phones का difference निकालना पड़ेगा, right? And also the difference between the t-shirts every time. So what is the difference that is coming in? Now this difference is what we call as change. Now definitely मैंने जैसे बताया था आपको कि if you want to buy more t-shirts, then you have to sacrifice cell phones. So t-shirts would be what? It would be your X, and cell phones would be what? It would be your Y. And your formula is what? Of MOC. Change in Y upon change in X. So at first you want to find buy 1 million t-shirts, and you are sacrificing how many cell phones? 10,000 cell phones you are sacrificing. Then you have to buy again 1 million more t-shirts, and in this time you are sacrificing 12,000, right? For 16,000. And this is how yesterday also we saw that this is how we can derive the answer, right? आपकी फॉर्मूला क्या होगी? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, राइट? यहाँ पे चेंज इन जो गिवन अप है होगा वो ऊपर रहेगा, दैट इज y होगा, और जो गेन करोगे वो x रहेगा, राइट? Let's understand that another problem. So country produces two goods, green chili and sugar. Its production possibility as shown in the following table. Now I want you to do it for a while, right? I'll just give 2 minutes. You can do it. और 2 मिनट के बाद जैसा हो जाता है, just raise your hand. Do it fast. And then we'll discuss the solution. Once you're done with it, you let me know. We'll discuss the solution. Take a pen and paper and start doing it. Yes, Vidhi? Sir, it's 6 raised to 1, 5 raised to 1, and 4 3 to 1. And go on till down. उसके बाद that's 3 raised to 1, 2 raised to 1, and 1 raised to 1 also, right? Yes, sir. Right? Fine. So if a marginal opportunity cost, remember, or MRT were decreasing, PPC will be how? So यहाँ पे आपको ग्राफ पूछा गया था कि PPC कैसा होगा, तो it will be like convex to the origin, right? So this is, you need to understand, it will be like a convex. क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो MRT बढ़ नहीं रहा है, MRT कम हो रहा है, it is goes on decreasing. अगर decreasing होगा तो वो convex रहेगा. See, in very few situation you will find that PPC is convex to the origin or linear to the origin. ज्यादातर टाइम में आपको ऐसे ही केस देखने को मिलेगा कि PPC is concave to the origin, right? Now that is why there is an important note to understand. Increasing slope का मतलब ये होता है कि PPC is concave to the origin. So let's say if marginal opportunity cost, just a minute, और MRT values are decreasing, अगर वो decreasing होगा तो PPC convex होगा, increasing होगा तो वो concave होगा, right? And if marginal opportunity cost MRT values constant हो रहा है, right, then it will be a straight line, and you can see with the help of this three diagrams. ये depend करता है कि आपका MRC और MOC कैसा है, उस हिसाब से आपका कर्व बैठेगा, right? So if MRT is increasing, definitely curve is concave.
If MRT is decreasing, curve will be convex, and if MRT is constant, curve will be linear, right? Now, the last thing that we need to understand in here, production possibility curve and economic problems. So what's the difference between production possibility curve and how we can find out the economic problems with the help of PPC? PPC की मदद से हम कैसे economic problems को solve कर सकते हैं? Now, we know that there are three basic questions, right, of the economy. But there are the economic problems of economy. When we talk about central problems of economy, then there are four, right? और ये four में पहला जो problem है वो allocation of resources है. So we see basically all the production that is happening in the economy, right? That is somewhere related to PPC. So basically what happens is PPC can be effectively used to explain the economic problems of what to produce, right? क्या produce करें. But we can also solve the central problems, right? जैसे कि allocation of resources है, what to produce, how to produce and whom to produce. Full utilization of resources है, economic efficiency है and economic growth. ये चारों के चार प्रॉब्लम हम पीपीसी की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, राइट? एंड वी नो दैट, we very clearly know that if you look at the PPC curve clearly, आपको काफी आउटपुट जो दिखेंगे वो अटेनेबल है, काफी आप दिखेंगे जो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन है, काफी ऐसे भी आउटपुट्स आप प्रोडक्शन की प्रेडिक्शन कर सकते हो जो अनअटेनेबल है, जो अभी अटेनेबल नहीं है पर मे बी कल उठ के वो अटेन हो सकते हैं, राइट? So it all depends on the PPC, right? And it all depends on what an economy can produce. Now with the help of PPC, हम PPC की मदद से हम ये चारों क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करेंगे, right? कि allocation of resources and economic growth, चारों के चार. So first, let's answer the question allocation of resources. Can we find out the solution of allocation of resources with the help of PPC? Yes, we can. Just a minute. There was some hanging. Okay, so what to produce? So all points of the PPC, production possibility curve, right? It says that what to produce and how much to produce. क्या produce करें और कितना produce करें, right? So definitely, अगर हम हर एक points को देखें PPC के ध्यान से, if we see all the points carefully and clearly, we'll find the solution. What to produce and how much to produce. All points on the curve are efficient and attainable. अगर कर्व के हर एक पॉइंट को अगर आप देखोगे तो वो एफिशिएंट भी है और अटेनेबल भी है. फॉर एग्जांपल, अगर आप डायग्राम को अच्छे से देखो, देन 2 यूनिट्स of good X and 18 units of good Y can be produced. But on the other hand, if the economy is operating at point C, then 3 units of good X and 15 units of good Y is produced. In other words, आप कोई भी पॉइंट को अटेन करने की कोशिश करो, राइट, इकोनॉमी में, you can produce good X and good Y. Definitely in a different proportion, but definitely you can produce. It is not like that you not produce. Just a minute. Thus, depend upon the nation's policy. Nation की policy कैसी है? It can choose any point on the curve which will solve the problem of what to produce and how much to produce. Right? So, अगर आपको क्या ज्यादा प्रोड्यूस करना है वो डिपेंड करना है, वो चॉइस करना है, वो आपके हाथ में है, राइट? वो नेशन के हाथ में. Just a minute. Now, how to produce? यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इकोनॉमी प्रोड्यूस किया जाए, राइट? हाउ टू प्रोड्यूस. It depends upon the technical production, whether you want to go for the labor intensive technique or you want to go for the machine techniques. So that's the technique of to be used for the production, right? The problem is to choose that a technique of the production which will maximize the production or minimize the cost. आपको वैसी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जो आपका प्रोडक्शन बढ़ा दे और कॉस्ट को कम कर दे. वही टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक होगी, right? So if you want to answer how to produce, you need to choose a technique of production. So only efficient technology should be chosen. और ये भी आंसर आपको कैसे मिल सकता है? All the points on PPC. अगर हम PPC को ध्यान से देखेंगे वो हर एक पॉइंट्स पे वो आंसर दे सकता है, right?
Just a minute. Hold on for a while. It is a bit hanging. Fine. Can you see the screen? Yes, sir. Okay. The next question is for whom to produce. This also need to be answered, right? किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, right? बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए. So production possibility curve fails to explain how distribution ratio takes place. Distribution कैसे हो रहा है वो production possibility curve actually बता नहीं रहा है. Just a minute. I'm again sharing my screen. Screen sharing बंद हो गया, I think, right? I hope अभी दिख रहा होगा आपको. Yes. So production possibility curve fails to explain how distribution of the nation takes place, right? वो exactly आपको नहीं बताता, but उसके जुड़े हुए काफी सवाल का आंसर्स देता है. Each point on the curve, if you see, it shows the maximum amount of the two goods that you can produce, right? So it has to be analyzed which section of society is demanding which good. आपको ये बेसिस पे एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा सोसाइटी का वर्ग या कौन सा क्लास ऑफ द सोसाइटी, which section of the society which demands what good. So for example, it may happen that if you look at the poor people, they demand more of the food items. If you if you look at rich people, they demand more of the luxury items, right? So it depends कि आपका distribution भी take place करेगा, depends करता है कि आप क्या produce कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो. So the rich section of society are getting more goods, then it shows unequal distribution of income and wealth. और उसमें भी अगर अमीर लोगों को ज्यादा मिल रहा है तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोला जाएगा, इट इज कॉल्ड अनइक्वल. और ये प्रॉब्लम पर्सिस्ट रहेगा. होम टू प्रोड्यूस का मतलब ये भी होता है that for each and every section of the society should get the equal amount of resources whatever they require. So if poor people are getting more goods, then it implies more equitable distribution of income. क्योंकि गरीबों को मिल गया उसका मतलब ये भी समझने में आ जाता है कि अमीर लोगों को भी by default मिल ही गया, right? So the next question, that is what we call about the full utilization of resources. So full utilization of resources कब हो सकता है? This problem is solved by all the points of PPC curve. यानी अगर आप फुल यूटिलाइज करो और वो एग्जैक्ट गुड्स बनाओ जो आप पॉसिबिलिटी है आप में, कोई भी रिसोर्स को वेस्ट ना करो, राइट, तभी फुल यूटिलाइजेशन हो सकता है. एग्जांपल, इफ देयर टू गुड्स हैव बीन मेड, व्हीट एंड राइस, तो आपके पास एक ही जमीन है और लेट्स से वो जमीन में आधा व्हीट बना दो और आधा राइस बना दो, पर आप ऐसे बनाओ कि एक भी जमीन का टुकड़ा वेस्ट ना हो, देन आई कैन से डेफिनेटली रिसोर्सेज आर फुल यूटिलाइज्ड. और इट आल्सो मींस that you are producing maximum amount of the goods that you can produce. That's a possibility जितनी भी आपकी है आप full utilize कर रहे हो उसको. So each point on the curve, again यहाँ पे भी आंसर वहीं पे मिलता है कि हर एक point on the curve of the PP dash, right, from top to the bottom, it answers this question. Any point inside the curve like point F, right, it will not answer because यहाँ पे आपको दिखेगा कि again resources are unemployed है या underutilized है. In other words, resources are not being used efficiently by increasing the use of resources. इंडिया में यही देखने को मिलता है. काफी मशीन्स, काफी प्लांट, इवन काफी लोग भी बेरोजगार हैं, राइट. Another example is underutilization of people. यानी हमारे वहां पे सिर्फ मशीन्स और रिसोर्स अंडरयूटिलाइज है ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे लोग भी अंडरयूटिलाइज है और इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत रैम्पेंट मात्रा में परसिस्ट करती है. This will be true. ये सही है because PPC is drawn on the assumption that the resources are fully employed. PPC हम इसी बेसिस पे ड्रॉ करते हैं कि resources fully employed है, पर मे बी इंडिया का PPC अगर आप देखने जाओ तो एक्चुअल होना जो चाहिए वो बहुत बड़ा होगा, पर रियल मात्रा में बहुत कम भी हो सकता है, राइट. सो व्हेन देयर इज अ मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, याद रखिए आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी भले ही कितनी भी अच्छी हो, इट विल रिड्यूस, राइट. And this will what? It will lead to the PPC, the point inside the PPC. And what it shows
द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपका रिसोर्सेज बहुत ही कम यूटिलाइज हो रहा है. समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Sir. Last, the yes. Any doubts? No, sir. Understood. Okay. Next is the economic efficiency. Now, what you mean by economic efficiency? जब हम economic efficiency की बात कर बोलते हैं तो resources wasted नहीं होने चाहिए, यानी mechanization और production होना चाहिए, फटाफट production होना चाहिए. That is what we call about efficiency. So again, if you want to answer with the help of PPC curve, अगर इसका भी आंसर अगर आपको PPC curve से चाहिए तो मैं यही बोल सकता हूँ कि सभी point on the PPC, every point on the PPC answer this question, right? That they are economically efficient. How? See, the aim of economy is what? That they produce economically efficient product, right? In such a manner that most of the product can be happen very fast and without any wastage. So any point beyond the boundary curve is unattainable. पीपीसी के बाहर का कोई भी पॉइंट अगर आप ले लोगे जैसे पॉइंट जी तो वो तो अटेनेबल है ही नहीं, उसको आप अटेंड तो कर ही सकते हैं. सो डेफिनेटली इफ यू वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन आल्सो you need to take all the points on the PPC curve only. And the last what we talk about is economic growth. Economic growth यानी बहुत सारा पैसा, बहुत सारा goods की अगर हम जब बात करें, so definitely production possibility says that you have a limitation, right? आपकी limitation है. Economic growth cannot be shown with the help of PPC, right? But it can be shown only with the discovery of stock of new resources. अगर आपको नया stock of new resources मिलता है या फिर आपको टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट मिल रहा है तो ही इकोनॉमी में पैसे बढ़ेंगे या इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगी, राइट? ये तभी हो पाएगा when you increase the productive capacity of the economy, otherwise not. So economy can produce more of the goods or more of the buy or both of the goods, x and y, right? And ये कब हो पाएगा? When you reach to the unattainable position. In other words, ये तब हो पाएगा जब आपका पीपीसी कर्व शिफ्ट होके आगे की तरफ जा रहा है, राइट? इट इज मूविंग अहेड. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. So that's it. यहाँ पे summary हम देख लेते हैं, right? So summary of all the current problems solved by the PPC, right, is given in a table. So let me show you the table. Allocation of resources की अगर हम बात करें तो what to produce, how to produce and how much to produce, ये भी सब कुछ यही point पे cover हो जाता है. All the points on PPC. Food and resources भी all the points on PPC, right? Economic efficiency भी all the points on PPC. But if you talk about economic growth should be point and higher than PPC, right? तो आपका PPC shift होना पड़ेगा तभी growth हो पाएगा. Otherwise PPC पे growth नहीं हो सकता, right? Because you need to produce more of X or more of Y or more of both the goods. I'm ending my session with a quote. याद रखिए ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बट बहुत इंपॉर्टेंट है. और सर आर्थर कॉनन डॉयल जिन्होंने शर्लॉक होम्स की रचना की थी वो बोलते हैं it has long been an axiom of mine that little things are infinitely most important. तो छोटी छोटी चीज का ध्यान रखिए, उसको पढ़िए तो अब आपको समझ में आएगा कि how the bigger things work, right? So I'm just ending my session with that quote. Thank you. Now if you have any doubts you can let me know.